seriously, and I was like, maybe. हाँ So I went home and then I had a talk with my mother. She obviously threw a fit हाँ because I come from a very conservative हाँ family. मैं sort of आने लगी थी कि you हाँ. come from a very conservative family. Yes, from my and father's side. from yes. your father's yes. side. और जहाँ Uh, तक सुना पड़ा है वो है कि it's a feudal background. it is a जी बिल्कुल feudal family है और उसके अलावा my father was also involved with politics थोड़ा बहुत उन्होंने किया था. उसके अलावा जो उससे added जो मुश्किलात आती हैं वो ये था कि हम गद्दी नशीन हैं. right. तो पर्दा भी और बहुत किस होता है. इलाके के? हासिलपुर चिश्तियाँ बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट साउथ Right. पंजाब. Right. सो वहाँ पे तो माय फादर वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन. वो एक्चुअली चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ. वैसे आना चाहिए था मुझे है ना? लगता है हाँ पता नहीं. अभी भी देर नहीं हुई वैसे अभी भी देर नहीं हुई हाँ शायद मे बी बट तो ऑब्वियसली वो तो नहीं होगा कि अभी उनका ये तो जहन में नहीं था कि भाई कभी सामने ही नहीं आना. ऑब्वियसली बिकॉज वी वेंट टू स्कूल एंड वी वर लिविंग इन लाहौर. तो बस ये था कि एवरी टाइम यू नो डू इन रोम एज द रोमन्स डू. कि हम जब गांव जाते थे तो ऑब्वियसली वो नकाब वगैरह करना पड़ता था. तो अम्मी थिंकिंग के अब्बू जो हैं वो मना कर देंगे तो उन्होंने कहा जाके बाप से पूछ लो. तो मी बीइंग अ लाडली and a very very spoiled child. So I asked Abbu and he said, okay, as you like. So my mother was just like staring at him in disbelief कि ये क्या कह रहे हैं आप. लेकिन या उसके बाद तो मैंने I suppose इसलिए किया शुरू में it seemed fun. Also मुझे लग रहा था कि I was also rebelling against a system. Right. So rebel with a cause or always been that way. But what would that cause be? अब समझ आती है उस Rebel cause against की? authority. Right. अगर मुझे किसी चीज की इजाजत नहीं है या कोई चीज अलाउड नहीं है तो यू मस्ट एक्सप्लेन टू मी व्हाई. नहीं हाँ, अगर किसी ने बस ये कह देना है कि यू हैव टू का जो फ्रेज है ना वो मुझे नहीं समझ आता. ईदर कन्विंस मी. हैव टू में मेरा I just lose it. I'm like, no. If you're saying I can't do this, then I have a feeling inside that I must do this. So there was not a lot of opposition, but there was a little concern. Right. मगर शुरू में I didn't take it very seriously. उसके बाद कुछ साल गुजरे जब मैंने एक प्रोजेक्ट किया था आओ कहानी बुनते हैं with सानिया सईद और नुमान एजाज का. वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था way ahead of its time. I think that's when I really started taking it seriously. That was in 2011. Yeah. Yes. That's where actually Google starts to. Google started taking me seriously also, and I started taking my work seriously. Yes, exactly. जी. उससे पहले अच्छा वो भी एक चीज थी because I was ज़ाहिर बात है लाहौर में पैदा हुए हैं, born and bred in लाहौर. तो यहाँ पे ज्यादातर लाहौर में सिटकॉम्स होते थे. Although मैंने शुरू में एक्सपेरिमेंट किया था सरमत के साथ भी किया था. उसका सीरीज लगती थी अजब कहानी. So there was that I did. और फिर सिटकॉम्स भी जवाद बशीर के साथ बहुत किया, समीना अहमद के साथ किया. तो जो सीरियल वाले लोग थे वो समझते थे कि मैं सीरियस एक्टिंग नहीं कर सकता. Right. Again that was a challenge. तो उसी वक्त मैंने I think I also joined theatre. Right. So Joker Theatre, that's very serious. That's theater. Right. It doesn't get more serious than exactly. that. Exactly. So उसके साथ ही उल्लू बराए फरोख्त नहीं. That was my first project. जो लाहौर से हुआ है और कराची में चला है जो हम टीवी पे चढ़ा था. Right. And it did very well on its own. It was really good for me. Yeah. So I got the spotlight. Yeah. And people were really surprised. हाँ. तो तब से मुझे फिर seriously लिया गया. जी. और अब मतलब and of course उल्लू बराए फरोख्त नहीं was huge, right? It was huge. That it's a was critically huge. acclaimed project. Absolutely. I mean in every way. And वो फिर बाद में जी जिंदगी पे भी उन्होंने भी pick कर दिया. They obviously changed the title and they started running it in India as well. But वो character वो इतना was such a difficult character to do. Yeah. तो वो मेरा ख्याल है कि अगर आपने वो अपने ऊपर से लेबल ही हटाना है कि आप सिर्फ कॉमेडी कर सकते हैं तो no better project than उल्लू बराए फरोख्त नहीं to just kind of like wash away that. Absolutely. That label that's been used. Yeah, I mean, what a project. And look at your co-stars. I mean, yes. It's like your oh my God. co-actors, you know, it's like dream yeah, project. It was जिन थे मेरे इर्द सारे. जी बिल्कुल ऐसा ही है. तो लूज बॉल का तो मार्जिन ही नहीं था मेरे पास. I had to bring my A game. हाँ. तो हर जगह भी नुमान एजाज है, इरसा गजल है, सबा है, युमना का तब नए प्रोजेक्ट था. युमना was a fantastic actor. काशिफ निसार, right? काशिफ निसार डायरेक्टर. सुहेल अहमद साहब हैं. मतलब सलीम मिराज साहब हैं. मतलब किधर जाएंगे आप? कहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ मैं नरगिस रशीद मतलब कौन नहीं था उस प्रोजेक्ट. बिल्कुल. But I was very fortunate.
And I हाँ, owe a lot of my career to Kashif Nisar. I mean, he is the one yeah. जिन्होंने मुझे he thought that I had a lot of potential. हम्म, तो उन्होंने मुझे बगैर कोई ऑडिशन या बस उन्होंने मुझे मेरा थोड़ा सा काम देखा होगा. हम्म. So he started giving me work, and he's the one who kind of changed my mind about Yeah, work. yeah. And And you've done several play dramas with her. जी मैंने काफी बिल सारे काफी किए. सारा काम किया उनके साथ, लेकिन ऑन द अच्छे डायरेक्टर्स के साथ किया है काम. अल्लाह का शुक्र है. हालांकि हाँ, अल्लाह चॉइस थी, मिल रही थी चॉइसेस, या वर यू बीइंग सेलेक्टिव? हर किस्म की स्क्रिप्ट आ रही थी, अच्छी नहीं बेकार? नहीं. I mean like to be honest, स्क्रिप्ट्स ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई इस तरह की कोई चीज़ है कि आपको बस आप एक दिन उठेंगे और 10 स्क्रिप्ट्स आपके पास पड़ी होंगी. हम्म, काम आता जाता है, लेकिन अक्सर औकात वो काम मैं समझती हूँ मुझे मेरी समझ में नहीं आया वो काम. हम्म. आई एम एन एक्सेप्शनली लेजी पर्सन. ओके. मेरी लाइक आई सेड पहले ही कोई एम्बिशन नहीं थी. हाँ. तो पढ़ा क्या मतलब है? सॉरी मैं बात काट रही हूँ, लेकिन क्या पढ़ा और क्या पढ़ के क्या नहीं, एम्बिशन क्यों नहीं बनी? कैसे पढ़ा नहीं ये थी? कि ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया. ठीक है, लाहौर से. लाहौर से. ठीक है. लाहौर ग्रामर. आई वेंट टू लाहौर ग्रामर. ठीक है. My batchmates are and my juniors are also in the industry. Jugan and I went to school together. ओके. Kef was my batchmate, Right. Kef Ghaznavi. Aisha Umar is a year junior. हाँ. So we're the same lot. Right. उसके बाद ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया. अम्मी ने इंसिस्ट किया कि मैं कनेड जाऊं. ठीक है. मुझे कोई शौक नहीं था जाने ठीक है. का. तो कनेड जाने का शौक नहीं था या पढ़ने का शौक नहीं नहीं था? मुझे पाकिस्तान में पढ़ने का शौक नहीं. नहीं था. My brother was already studying in the US. ठीक है. एंड मुझे ये था कि भाई मुझे बाहर जब भेज दें आप. हाँ. एंड ऑब्वियसली अगर आप एक जिम्मेदारों की फैमिली से हैं तो आपकी तो फसलों पे कटाइयों पे आपके पैसे होते हैं. तो देयर इज नॉट सो मच कैश लाइंग अराउंड कि आप दो बच्चों को उस जमाने में इकट्ठे बाहर पढ़ने में. तो अब लाइक लाइक होल्ड ऑन, हौसला कर लो. हाँ. और कनेड में गई तो मुझे समझ ही नहीं आई किसी चीज की वहां पे. आई मीन आई सॉर्ट ऑफ डिडंट मेक सेंस टू मी. या. So I decided after a year or two that I'm just not going to do this anymore. So I dropped out. Well done. Okay. Yes. And हाँ. may I add that acting अभी तक जो है हाँ. ये वो वाहिद चीज है जिसमें मैंने इंटरेस्ट नहीं लूज किया. Because I Okay. lose interest very quickly. Okay. And I start something like मैंने makeup के courses किए. हाँ. I was always into makeup. हाँ. I wanted to be a makeup artist and I didn't do that. Hmm. I didn't see it through. इस तरह की बहुत सारी चीजें मैंने की और मैं जल्दी ही बोर हो जाती थी. बस ये एक अभी तक मैंने काम ऐसा है that has kept my interest for God knows what reason. हाँ. मगर मतलब it means के अंदर कोई कीड़ा तो है ना, एक खुदा फनकार, जाने वो कौन सा एक फनकार तो है अंदर, इसका मतलब है जो कि I had fine. I mean, बस temperamental तो artist की तरह ही है. तो but फिर you artist enjoy your work, right? I Okay. enjoy my work. Okay. But that's why I'm so picky about my work. It has to be something जिसको आप enjoy भी कर सकें. हाँ. वरना तो आप मतलब स्क्रिप्ट पढ़ते कहेंगे यार ये क्या करना है इसका. तो हाँ. इसी वजह से मेरा ख्याल है कि कंपैरेटिवली दूसरे एक्टर्स से मैंने बहुत कम काम किया.